याला रिअरेंज करावं लागेल थोडं. ठीक आहे. सो this can be rearranged with these terms. This can be written as yala a square plus 2ab plus b square. In this form it can be written. Okay, so this can be written as d plus d dash whole square. D plus d dash whole square. Then taking common 2, so this can be written as d plus d dash and then plus 1, operating on z equal to 0. And what, again this can be written as a square plus 2 into a into b plus b square. So this can be written as d plus d dash plus 1 whole square z equal to 0. And its complementary function will be now it is in the form, which form, d minus m d dash minus a whole square z is equal to 0. So in this case its complementary function is z is equal to e raised to power ax into phi 1 y plus mx plus x into e raised to power ax phi 2 y plus mx. So complementary function can be written in this form. Okay, so here the value of m is -1 and a is also -1 and a is also -1. Okay, so we write here solution, its complementary function. Complementary function is equal to e raised to power ax. A means -1, no need to write -1. Okay, only we write -x. Then phi 1 y plus mx, value of m is -1, so y minus x plus x into e raised to power -x phi 2 into y minus x. So this is the complementary function. Now next, example number 44. Example number 44. Solve r minus t plus p plus q is equal to 0. So already I told that what is mean by p. P means dou z by dou x. What is mean by q? Dou z by dou y. ठीक है, यूनिट 1 में भी हमने यही नोटेशंस यूज किए हैं. Then what is r? R is nothing but the dou 2z by dou x square, and t is dou 2z by dou y square. Okay, so this equation can be written as, this equation can be written as dou 2z by dou x square minus dou 2z by dou y square, then plus dou z by dou x and plus dou z by dou y is equal to 0. Okay, now next what we do, we again write this expression in this standard form by replacing dou by dou x by d and dou by dou y by d dash. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर प्लस d
plus d and plus d dash is equal to 0. ठीक है, not equal to 0, this will operate on z. ठीक है, so here minus q is there, यहाँ पे minus q है. ठीक है, here also minus q and here will be minus sign, minus minus. Okay, so using this 2 and using this 2, तो इसे हम a square minus b square का फॉर्मूला लगाएंगे. that can be written as a plus b into a minus b. So this can be written as d minus d dash into d plus d dash. ठीक है, and here taking one common, and this can be written as d minus d dash operating on z is equal to 0. Then again take this d minus d dash equal to common outside, so this will be d minus d dash into d plus d dash plus 1 is equal to 0. So here this can be written as d minus d dash plus 0. a नहीं है तो 0 लेंगे वहां पे. ठीक है, so what is the value of a here? 0. and here d plus d dash plus 1 operating on z, इसको नहीं भूलना है, equal to 0. So therefore the complementary function will be, here the value of m is 1 and a is 0. Then here value of m is minus 1 and a is also minus 1. Therefore complementary function will be equal to e raised to power 0x into phi 1 of y plus x. What's the value of m? 1. ठीक है, और plus e raised to power minus x phi 2 into y minus x. So again we write in the standard form, complementary function is equal to phi 1 y plus x plus e raised to power minus x into phi 2 y minus x. So इतने problems थे वहां पे. ठीक है, all these problems are solved problems from the textbook. Now we next move to the particular integral. How to find the particular integral? पर्टिकुलर इंटीग्रल, अभी जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी ढूंढना है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी ढूंढना है. मीन्स वी हैव टू फाइंड इट्स solution, complete solution, which is in the form of complementary function plus particular integral. ठीक है, so case 1, so what's the case 1? Whenever f of x y is in the form of e raised to power ax plus by, ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे बनेगा? दैट फॉर्मूला इज सिमिलर एज वी हैव डन प्रीवियसली. ठीक है, सो इट इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश इंटू ई रेज टू पावर ax प्लस बी वाई. तो d के जगह पे a से रिप्लेस करना है और d डैश को b से रिप्लेस करना है. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन f of ab into e raised to power ax plus by. Very simple. Okay, so next example first we will do on this type. Okay, so example number 45. Solve d minus d dash minus 2
into d minus d dash minus 3 operating on z is equal to e raised to power 3x minus 2y. 3x minus 2y. ठीक है, this side is not equal to 0, therefore final solution. इसके पहले भी बताया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपका ऐसे फॉर्म में होता है f of d d dash is equal to 0, then its final solution will be of the form z is equal to only complementary function. ठीक है, but if your problem f of d d dash operating on z and again some terms containing x and y are there, ठीक है, f of x y, तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा that z will be in the form of complementary function plus particular integral. So remember this. ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा that will be in the form of complementary function plus particular integral. So very first we have to find its complementary function. So complementary function को find करने के लिए d minus d dash minus 2 into d minus d dash minus 3 operating on z, and we will consider it is equal to 0. And very first we write complementary function. ठीक है, तो ऑलरेडी ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, सो नो नीड टू सेपरेट, नो नीड टू सिंप्लीफाई इट. ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो दिस विल बी व्हाट, हियर द वैल्यू ऑफ m is 1 and a is 2, और यहाँ पे m का वैल्यू है 1 and what a is equal to 3. a is equal to 3. So e raised to power 2x phi 1 y plus x plus e raised to power 3x phi 2 y plus x. This is the complementary function. ठीक है, now next to find particular integral. So what is the particular integral? Particular integral is equal to 1 upon f of d d dash into f of xy. Here f of xy is e raised to power what? e raised to power 3x minus 2y. 3x minus 2y. ठीक है, so we will have to replace d by a which is equal to 3, और d dash को रिप्लेस करना पड़ेगा b से जिसकी वैल्यू है -2. ठीक है, so particular integral is equal to 1 upon d minus d dash minus 2 into d minus d dash minus 3 into e raised to power 3x minus 2y, and we will substitute in place of d 3. So this 1 upon d means 3 minus d dash means -2 into d means 3 minus d dash means minus of -2 and -3 into e raised to power 3x minus 2y. So this can be written as 1 upon 3 plus 2 minus 2 and 3 plus 2 minus 3. So this 2 cancel, this 3 cancel. E raised to power 3x minus 2y. And this is nothing but the 1 upon 3 into 2 means 1 upon 6 into e raised to power 3x minus 2y. Okay, so this is the particular integral, and now next to write final solution. Therefore solution will be
z is equal to complementary function plus particular integral. So here z will be e raised to power 2x into phi 1 y plus x and plus e raised to power 3x phi 2 y plus x plus 1 upon 6 into e raised to power 3x minus 2y. ठीक है, so this is the complete solution. ठीक है. नेक्स्ट केस नंबर 2. एक प्रॉब्लम सफिशिएंट है, ठीक है, बाद में देखेंगे कुछ अनसॉल्व ले सकते हैं क्या. ठीक है, so case 2, whenever your f of x y is in the form of sin ax plus by, or in place of sin we can consider cos ax plus by also. ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो वेरी फर्स्ट वी विल राइट 1 अपॉन f of d dash into f of xy, which is f of xy is nothing but the sin ax plus by. ठीक है, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन हियर, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको लिखेंगे इस फॉर्म में डी स्क्वायर डी इंटू डी डैश एंड डी डैश स्क्वायर. ठीक है, और फिर डी स्क्वायर के जगह पे रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर, देन डी इंटू डी डैश के जगह पे रिप्लेस करेंगे माइनस ए बी, एंड डी डैश स्क्वायर के जगह पे रिप्लेस करेंगे माइनस बी स्क्वायर. द सेम एज वी हैव डन प्रीवियसली. ठीक है, सो then this will be the what will be your particular integral. Then particular integral is equal to f of d square के जगह पे minus a square, d into d dash के जगह पे minus ab, and this is minus b square into sin ax plus by. ठीक है, so we solve next example based on this. Example number 46. Example number 46. Solve d plus 1 into d plus d dash minus 1 operating on z is equal to sin x plus 2y. Sin x plus 2y. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट वी विल फाइंड, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में. तो इसका सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए d plus 1 into d plus d dash minus 1 operating on z, we will consider it is equal to 0. ठीक है, if we compare with the standard values of m and a, तो यहाँ पे m का वैल्यू है -1 और a का वैल्यू है +1. ठीक है, this we have done in last lecture. और यहाँ पे m वैल्यू इज -1 और a नहीं है, इसलिए a का वैल्यू है यहाँ पे नहीं सॉरी, a का वैल्यू है, m नहीं है, d डैश की टर्म नहीं है. ठीक है, d डैश की टर्म नहीं है, इसलिए क्या आएगा, m is 0 and a is -1. a is -1. ठीक है, therefore complementary function will be e raised to power -x
phi1 of y प्लस 0x, m की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, और प्लस e raised to power ax means x phi2 and y minus x. So this is the complementary function. ठीक है, साथ साथ में दोनों प्रैक्टिस हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की भी और पर्टिकुलर इंटीग्रल की भी. Now we next find particular integral. So particular integral find करने से पहले जो हमारा एक्सप्रेशन है d प्लस वन इंटू डी प्लस डी डैश माइनस वन, इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं. these are given in the bracket separate form. ठीक है, so if I multiply then I can write here d square d into d square, then d into d dash plus d into d dash, then d minus d plus d plus d dash, and this is minus 1. So this minus d and plus d gets cancelled, so it is written as d square plus d into d dash plus d dash minus 1. Okay, and now we substitute here p of pi is equal to 1 upon f of d dash into f of xy. Here f of xy is what? Sine x plus 2y. Sine x plus 2y. ठीक है, so पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला लिखेंगे. ठीक है, सो डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 2y. हियर वैल्यू ऑफ a इज 1 और b का वैल्यू है 2. ठीक है, साइन ax प्लस by से अगर कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2. सो डी स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर विच इज माइनस 1, एंड d इंटू डी डैश के जगह पे रिप्लेस करना है व्हाट, माइनस ऑफ ए बी विच इज माइनस 2. और डी डैश स्क्वायर की टर्म तो है ही नहीं, तो वहां पे हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे. ठीक है, सो this particular integral will be d square means minus 1, d plus d dash means minus 2, plus d dash minus 1 into sine x plus 2y. Then this d dash minus 1 minus 2 minus 3 and minus 1 means minus 4 to sine x plus 2y. ठीक है, अब यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर टर्म में ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय d dash plus 4 and here d dash minus 4 and d dash plus 4. ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे. sin x plus 2y. I hope it is clear. ठीक है, now here we will consider, here we will apply the formula that a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. So this can be written as d dash plus 4 upon d dash square minus 4 square मतलब 16. ठीक है, and into sine x plus 2y. So now here in place of d dash square we will substitute what, minus b square. Minus b square means minus 4, and this will become d dash plus 4 upon minus 4 minus 16 sine x plus 2y. Sine x plus 2y
एंड इट इज इक्वल टू -1/20 को बाहर ले लेते हैं, d dash plus 4 will operate on sin x plus 2y. ठीक है, तो this -1/20 outside and this d dash will operate on sin x plus 2y, and this will be 4 times sin x plus 2y, like this. So this d dash means is nothing but the differential with respect to y, with respect to y. ठीक है, differential with respect to y. So what's the differential of sine? Differential of sine is cos of x plus 2y and into 2. ठीक है, and this is plus 4 into sine x plus 2y. And so now if I take this 2 outside, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है, so this will be written as -1/10 into cos x plus 2y and minus 2/10. 2/10, then again it will become what? 1/5. So 1/5 sine x plus 2y. ठीक है, so this is our final particular integral. So finally we write solution. Therefore solution z is equal to, what was complementary function? Complementary function, yes, e raised to power minus x, and here one more step we increase, phi1 of y plus e raised to power x into phi2 y minus x. So this is our complementary function. ठीक है, so z is equal to e raised to power minus x into phi of y plus e raised to power x into phi2 y minus x, and then particular integral. So what's particular integral? -1/10 cos x plus 2y, and this is -1/5 sine x plus 2y. This is the final solution. Now next is case number 3. Case number 3, and this is the case when f of xy is in the form of polynomial in xy. Okay, so this is also the same we have done previously. ठीक है, ये भी मेथड वैसे ही है जैसे कि हमने पहले किया है. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है, वी राइट f of d dash x raised to power m into y raised to power n, and we solve that f of d dash inverse x raised to power m into y raised to power n. कि इसको सॉल्व करते हैं और फिर बाद में उसका सॉल्यूशन, उसको फॉर्मूला लगाते हैं इनवर्स का, एंड देन वी सॉल्व द इक्वेशन. ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 47. Example number 47. Solve d2 minus d2 dash और d dash square, ठीक है, प्लस d plus 3d dash minus 2
operating z and is equal to x square into y, x square into y. ठीक है, so here यहाँ पे d स्क्वायर है, यहाँ पे d डैश स्क्वायर है, यहाँ पे d है, एंड हियर इज व्हाट d dash. So what we do, we just simplify d square. This means this can be written as d square minus, इसको ही पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. Wait a minute. So d square minus d dash square plus d plus 3d dash minus 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे in the form as d minus d dash plus 2 into d plus d dash minus 1 minus 1. ठीक है, and in place of that this we will write here d minus d dash plus 2 into d plus d dash minus 1 operating on z is equal to x square into y. And very first we write here complementary function. So complementary function is nothing but the here value of m is 1 and a is minus 2. Here value of m is minus 1 and a is plus 1. A is plus 1. So complementary function is e raised to power minus 2x into phi 1 y plus x and plus e raised to power x into phi 2 of y minus x. And next is remaining as particular integral, so that we will do in next lecture. ठीक है.